we shall study today again complex numbers with some of the properties and some of the criteria. Let us take first of all properties of conjugate complex number. Say z is equal to x plus iy. You might be knowing in general we represent z conjugate will be x minus iy. Now I shall consider z1 is equal to x1 plus iy1. z2 is equal to x2 plus iy2. z3 is equal to x3 plus iy3 and so on. I shall write in future conventionally in such a way. Now properties. First of all, property z1 plus z2 whole conjugate. Yani after addition, if we take the conjugate, that will be equal to z1 conjugate plus z2 conjugate. Yani conjugate of individual. Sum of conjugate of individual. Similarly, दूसरी property z1 minus z2 conjugate is equal to z1 minus z2 conjugate, z1 conjugate minus z2 conjugate. Third property z1 into z2 z1 z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate into z2 conjugate. Similarly, we may get z1 upon z2 whole conjugate will be equal to z1 conjugate upon z2 conjugate. That means, what shall we do? If we take the conjugate of individual, so sum of the complex number and take conjugate is equal to sum of conjugate of individual. यानी आप ये समझिए, अगर हम z1 और z2 के conjugate इंडिविजुअल लें या सम करके लें, प्रोडक्ट करके लें, डिफरेंस लेके लें, तो वो इंडिविजुअल के भी सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एटसेट्रा होंगे. ठीक है. तो ये चार प्रॉपर्टी मैंने लिख दी. और मेन प्रॉपर्टी ये है. आई एम राइटिंग दी मेन प्रॉपर्टी हियर. इफ वी टेक z conjugate of conjugate, that is quite simple. Conjugate of conjugate means the complex number itself. फिर से वही आ जाएगा. And z conjugate is equal to real z whole square plus imaginary z whole. That is important property. These are properties for general conjugate and complex number. Conjugate of complex number. यानी अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसके कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट के साथ अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो उनके रियल पार्ट के स्क्वायर के और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम के ऊपर होती है और वो की एक रियल नंबर. मेन नाउ
further, if we consider z plus z conjugate, that is twice real part of z, and z minus z conjugate is equal to twice imaginary part z into if you notice z plus z conjugate will be only real value, that is purely real, while difference, that is z minus z conjugate is equal to purely imaginary value. अब देखिए इसको हम कैसे यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को. सपोज if we are interested conjugate of this, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वी हैव टू राइट दिस x plus I y form and its conjugate. Find this x plus I y form. तो कैसे फाइंड करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए. और इसका फिर कॉन्जुगेट कीजिए. वी आर गेटिंग 8 minus 9i square plus plus 9i square plus 18i upon 16. That is minus 1 plus 18i upon 25. That complex number comes to be this one, minus 1 plus 18i by 25. We take conjugate, so we get minus 1 minus 18i by 25. Now we may take, if you take, you may try it yourself. That is equal to conjugate of numerator, that means 2 minus 3i, or conjugate of denominator individual. If you try, you will get this thing only. So you may use this property. If you simplify, ये आपको करना है एज ए प्रॉब्लम. सिंप्लीफाई करके देखिए, आपका यही आना चाहिए. ये मैं आपसे पूछूंगा. नेक्स्ट, सपोज आई राइट 2 plus I upon 3 minus I plus 2 minus I upon 3 plus I. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी गेट? वी हैव टू टेक एलसीएम. टू प्लस आई इंटू 3 plus I, that is the criteria. आपने इतना तो पढ़ा ही होगा. Now, इसका मल्टीप्लीकेशन 6 plus I square
प्लस 5 जहाँ पर प्रॉब्लम हो स्टेप ब्रेक करके अपने आप अपने इसका सॉल्यूशन करके देखिए, वेरीफाई करिए यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ये क्या आएगा? सिक्स प्लस आई स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 9 प्लस वी आर गेटिंग 6 minus 1 plus 5i plus 6 minus 1 minus 5 upon 10, and we are getting 5 5 10, that will cancel out 10 upon 10, that is simply 1. That's it. Now if we are not interested the value, but we have to prove as it is that the sum of these two is a purely real number. So what will we do? That is simple. We have to show that it is a conjugate of this. 2 plus I, 2 minus I. इसका conjugate हुआ, that is the form of Z1 upon Z2. So that will be Z1 conjugate plus Z2 conjugate if we write. Is it clear? By using the property we may get Z1 plus Z2 plus Z1 upon is equal to Z1 upon Z2 plus Z1 upon Z2 और कॉन्जुगेट। अभी जैसा कि बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट का सम ट्वाइस रियल होता है, तो अगर आप सिंप्लीफाई करके देखें ट्वाइस रियल यही आएगा। तो वी कैन शो सिमिलरली इफ यू टेक माइनस इन दैट केस दैट इज प्योरली नो, यू कैन प्रूव बाय डूइंग दिस, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज यू कैन। Now, I will take another example. Suppose I am writing we have to prove that a square plus b square upon c square plus t square is equal to x square plus y square। देखिए दो मेथड फिलहाल इसके हैं। पहला, फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर if x plus I by form by taking denominator as purely real. How will we do? ये काम आपका है, आप वेरीफाई करके देखेंगे। बाय मेकिंग कॉन्जुगेट आप करके देखिएगा। चलिए हम ही करके दिखा देते हैं इसको, क्योंकि मुझे मालूम है सम ऑफ द कैंडिडेट्स लीव एज इट इज। तो क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ए सी प्लस पहले मैं लिख रहा हूं आई माइनस आई स्क्वायर बी डी प्लस आई कॉमन लिया BC minus that is equal to AC plus BD plus I BC minus AD upon
C square plus T square. We will make individual. I think there is no problem. And that is equal to x plus I. By comparing real and imaginary parts, what we get? AC plus BD upon C square plus T square is equal to x, while BC minus AD upon C square plus T square is equal to y. अब देखिए आप, ये तो सिर्फ x plus y आया. Now we have to prove right side is equal to this. That means we have to making square x square and y square and then add. देखिए, let us see how much long is it is. That is x square plus y square is equal to AC plus BD whole square upon C square plus T square whole square. BC minus AD whole square upon C square plus T square whole square. Now that is equal to A square C square plus P square D square plus twice A B C D. Here that will be B square C square plus A square D square minus 2 A B C D. These will cancel out, and here you are getting C square plus D square whole square. Now what we get here, that is equal to, you may make it factorial by you making group. Suppose we make like that. So what we do, take C square common, A square plus B square plus D square, A square plus B square upon C square plus D square whole square. Now we may make it factorize. That is equal to C square plus T square A square plus B square upon C square plus T square whole square. One factor will cancel out. Now we are getting the result up to here. There are few steps. Yet, now I take another method by using properties. Let us see how it is. Now take the conjugate of this x minus I is equal to conjugate of this, that is A minus IB upon C minus I, and conjugate of this upon conjugate of this. Now this and this multiply together and this and this multiply together. We get x plus IY into x minus IY is equal to A plus I by B into A minus IB upon C plus ID C minus ID. Left side we get x square plus y square by taking properties as described earlier. In right side also we are getting the same type of things, that is A square plus B square on C square plus T square. There is no problem. We are getting only in these steps. तो ये आपका काम है देखना कि कौन सा मेथड पसंद करेंगे, छोटा मेथड या लेंथी मेथड. प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए और आपको उनको यूज करना आना चाहिए. तो दैट इज द प्रोसेस हाउ वी गेट बाय यूजिंग प्रॉपर्टी.